Okay, good afternoon all. Let's start. Yesterday we talked about MySQL and let's continue with the same. We have done till create table and then alter table. Now today we are going to start with insert into command. Right now, insert into command is a command which is basically used to add up a new row into the table. Right? Okay, हमने table create करना सीखा था. How do we create a table with constant values and all foreign keys वगैरह कैसे लगाते हैं. Now we'll continue and we'll try to learn how to add a new row inside a table, right? So let me share the presentation with you people first. Okay. Okay. So insert into command is used to insert a new tuple in a relation. Tuple is row. Tuple is also row. Row can also be called as a tuple here. And relation का मतलब table होता है. So we can add a new row. We can add a new tuple in the relation with the help of insert into command. Now, one or two things we need to consider. One is that one thing is so whenever we need to add up a new row, we must be clear with the names of the columns or number of the columns, right? Order is very important. See, as you see here, we have that create table teacher here. Teacher table has been created. These are all different columns it has. Teacher ID is there, first name, last name, gender, salary, date of birth, department number, right? Constant values in foreign key, etc. is also added. So anyhow, we have in hall 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 different columns, right? और दूसरी चीज हमें ध्यान में रखना है कि हर कॉलम का डेटा टाइप कैसा है, उसमें जो वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे दैट वैल्यू शुड बी exactly that matches the definition of the column, right? So to add up a new row, we'll write insert into, as you see here at the bottom, insert into teacher. Teacher is the name of the table, right? Put a word values, right? Values लिख के ब्रैकेट ओपन करो. Then what was the first column? Teacher ID. Same order में आपको values डालनी है. Teacher ID was integer, so we have to add up a integer value here. Then first name, like Shania is the first name. Last name, Batra is the last name, right? Gender F, right? Now gender, why it is F only? Why not female? Reason is that size we have given only one, right? The data type is char 1. Fine. So char का size 1 है. 1 मतलब only one character can come. So F या M ही आएगा. ये चीजों का ध्यान रखना है. Salary decimals में है. Salary is let's say 50,000, right? So, or you can write 50,000.0, right? Even if you don't write 0.0, it will automatically pick up 0.0 only. Then date of birth column, date of birth में क्या data type है? Date. So we have to enter a date, right? Remember the format of the date should be year first in 4 digits, 4 numbers, 4 digits, dash month 2 digits का, dash डे दो डिजिट का. 2 डिजिट लगाना जरूरी है. जैसे 8 है तो इन प्लेस ऑफ 8 विल राइट 08, नॉट ओनली 8. ठीक है. 4 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट विद डैशेस. Lastly, we have department number. We can give any number here. It is integer. Any integer value can be entered. Right. One more thing we need to see here is all the text values as well as dates are written in inverted commas. You see Shania is written in inverted commas, Batra also, F also, and date also.
इनको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है। दैट मीन्स कैरेक्टर्स जितने भी हैं या डेट जितनी भी है उनकी वैल्यूज हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में आएगी, राइट। इन्वर्टेड कॉमास कैन बी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, इट कैन बी डबल इन्वर्टेड कॉमा, यू कैन राइट इन एनी ऑफ दैम। ठीक है, जैसे आप देखो एफ हमने सिंगल में लिखा है, डेट सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में है, बत्र और शनाया जो है डबल इन्वर्टेड कॉमास में है, बोथ कैन बी यूज्ड, राइट। और जो नंबर्स हैं, all integer values are written without inverted commas. 101 is not with a comma, 1 is also not with a comma, right? So ये ऑर्डर में ऐसे ही डालना है जैसा हमारा टेबल का कॉलम्स का ऑर्डर है। Then close the bracket, put the semicolon and press enter. This will insert a row, right? Now there is one more form in the sense कि एक और तरीका है। ये तरीका बेसिकली, ये तो चलो सिंपल है। दूसरा तरीका ये है कि मुझे ऑर्डर जो है आगे पीछे करना है। आई वॉन्ट डिपार्टमेंट नंबर टू बी रिटन फर्स्ट, सैलरी टू बी रिटन एट द लास्ट, जेंडर पहले आए, तो ये ऑर्डर आगे पीछे करना है। तो अगर आपको ऑर्डर आगे पीछे करना है देन यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द कॉलम इन दैट ऑर्डर ओनली। सी हियर, जैसे यहाँ पे देखो, इंसर्ट इनटू टीचर ब्रैकेट, पहले फर्स्ट नेम लिखा है जबकि यहाँ पे पहले टीचर आईडी था, राइट। So we have written first name, comma, last name, comma, gender, comma, teacher ID, comma, date of birth, comma, department number, comma, salary. So order we have changed, right? So this we can do, bracket लगा के teacher table के नाम के बाद put a bracket, then write the order in which you want, right? Close that bracket, then write values, and then write the values in the same order which we have mentioned here. ठीक है, ये ऑर्डर में डालना है। फर्स्ट नेम में वैल्यू आ गया शनाया, लास्ट नेम में आया बत्रा, जेंडर विल हैव एफ, टीचर आईडी इज 101, डेट ऑफ बर्थ इज दिस, एंड डिपार्टमेंट नंबर इज 1 एंड सैलरी इज 50,000, राइट। सो दिस कैन आल्सो बी डन इन केस यू वांट टू चेंज द ऑर्डर, इन केस इट्स नॉट कंपल्सरी, इट इन केस यू वांट टू चेंज। नाउ देयर इज वन मोर थिंग हियर, इन केस you want to skip a value, skip in the sense, for example, if you see this table again, the salary column has a default value 40,000. So that means if I don't enter anything into the salary column, 40,000 will be automatically picked. ठीक है, so हम salary column को skip कर सकते हैं, right? Now how will you skip this? Skip करने का है, if salary was not specified in the insert column, then its default value 40,000 as given in the table creation command would have been used as shown below. So you have to write all the columns. Salary यहाँ पे last column है, values हमने सारी दी, last में हमने comma लगा के blank छोड़ दिया, right? So this can also be done. That means 40,000 will automatically come. ठीक है, जो डिफॉल्ट वैल्यू, बट दिस कैन ओनली हैपन इफ वी हैव ऑलरेडी सेट ए डिफॉल्ट वैल्यू। अगर आपने डिफॉल्ट नहीं लगाया तो ये थोड़ा गड़बड़ होगा, ठीक है। एंड इफ देयर इज वन मोर थिंग, तो मुझे कुछ कॉलम्स में वैल्यू डालनी ही नहीं है, आई डोंट वांट टू एंटर द वैल्यू, डालनी नहीं है मतलब वहां पे नल रहेगा। तो जिस कॉलम में आपको वैल्यू नहीं डालना है उस जगह पे नल लिख दो, एज यू सी हियर, insert into teachers, first name, last name, gender, teacher ID, date of birth, department number, salary. This is the complete table columns that we have there. तो हम values लिख रहे हैं तो last में हमने null लिख दिया है, that means salary will not have anything, right? null मतलब वो खाली रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर हमने टेबल क्रिएशन के टाइम पे सैलरी के आगे नॉट null, okay, so I was talking that if you want to leave anything blank, you have to put null there. One more alternative for this is कि आपको जिस कॉलम को ब्लैंक छोड़ना है
उस कॉलम का यहाँ नाम ही यहाँ से स्किप कर दो, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। इंसर्ट इनटू टीचर, आई वांट ओनली फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, मुझे बाकी किसी कॉलम में कुछ नहीं चाहिए। So I'll put these two names only, then I write values, put a bracket, first name let's say ABCD, comma, last name XYZ, bracket close, semicolon. There. So this is also one way that if you want to add values to some specific columns only, तो आप उन columns के यहाँ पे नाम specify करो और उनकी specific values उसी order में लिख दो। इसमें क्या होगा कि जो बाकी के columns हैं उनमें null आ जाएगा, null मतलब वो blank रहेंगे, ठीक है। But again we have to check one thing, कहीं पे not null constant ना डाला हो या कहीं पे प्राइमरी की लगाया है तो प्राइमरी की वाले कॉलम में आप नल नहीं डाल सकते, सो इन दैट केस यू विल गेट एन एरर, ठीक है। तो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, अगर आपको कहीं ब्लैंक छोड़ना है तो वहां पे नॉट नल कंस्टेंट है तो आप नहीं कर सकते, ठीक है, कंस्टेंट आपको चेक करना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ वी कैन ऐड अप ए वैल्यू टू स्पेसिफिक कॉलम, फाइन। So that's it all from insert into. Let me just open up MySQL interface also side by side so that we can see the commands. Yesterday we practiced alter table, so let's practice MySQL and insert into command also. Okay, I'll share the screen. Mere vidro. Okay, let's write show databases to see all the databases that we've collected. कल हमने I think class शुरू किया था. Let's see. Use class. Now इसमें हमने tables क्या बने थे? Let's see. Show table से हमें table पता लग जाएंगे. DEPT sailors और teacher table था, right? Select star from DEPT. It is empty. There is no value here. और इसका description देख लेते हैं. DEPT. So we have three columns here: DEPT ID, DEPT name, and ID. Right? And ID is one column where reference key is also made. Reference हमने लिया है टीचर टेबल से, तो हम एक बार वो भी ओपन कर लेते हैं क्योंकि इन चीजों का ध्यान बाद में रखना पड़ेगा। ओके, आईडी में इंट आना चाहिए, राइट। So let's add some values into DEPT table. DEPT table खाली है, भी blank है, empty set लिखा है, means there's nothing there. So like insert into DEPT values. पहला कॉलम है DEPT ID.
तो id में integer वैल्यू देना है, let's say 121. then dept name कैरेक्टर है, IT डिपार्टमेंट कर देते हैं. Then next is ID only. ID is again an integer value, right? So let's take another ID, let's say 999, bracket close, semicolon, enter. Okay, so we have a foreign key constraint, so whatever value we have in ID here, we can only add that value, right? So let's see those values first. ओके, आईडी वैल्यूज इन चारों में से होनी चाहिए. रीजन ये है कि ये आईडी जो है यहाँ पे फॉरेन की है, कलम में फॉरेन की ऐड किया था. दिस आईडी इज ए फॉरेन की हियर, सो इट कैन हैव ओनली वैल्यूज आउट ऑफ दीज 4 वैल्यूज, राइट? सो ये चीजों का ध्यान रखना है. तो इन प्लेस ऑफ 999 वी हैव टू पुट 101 पुट कर लेते हैं, राइट? क्वेरी ओके, दैट मीन्स 1 रो इज एडेड. Let's see the values. To see the values, we put select star from DEPT. लो जी, ये हमारी वैल्यूज ऐड हो गई, एक रो ऐड हो गई, राइट? Now let's practice that thing. Insert into DEPT, put a bracket. Sorry, मुझे वैल्यू डालनी है सिर्फ DEPT ID में और ID में. नेम वैल्यू मुझे छोड़नी है, DEPT नेम. सो यहाँ पे DEPT ID हम चेंज कर देते हैं 111 और डिपार्टमेंट ID हम निकाल लेते हैं. हम सिर्फ 2 वैल्यूज डाल दें, राइट? सो वी आर नॉट एंटरिंग एनी वैल्यू इन द सेंटर वाला कॉलम डिपार्टमेंट नेम. वेरी ओके. नाउ सी दिस, यहाँ पे 101 आ गया और नल आ गया. नल आ गया मतलब दिस इज ब्लैंक नाउ, ठीक है? तो ये हम कर सकते हैं. इफ यू वांट टू पुट एनीथिंग ब्लैंक, देन आइदर वी स्किप दैट कॉलम नेम हियर एंड पुट द वैल्यूज, और इसी चीज को सेकंड मेथड से कैसे करेंगे? इंसर्ट इनटू DEPT एंड मैं कॉलम नेम हटा रहा हूं, वैल्यूज let's say 131 null and department ID. Okay, right? So see, third column is also added, right? और यहाँ पे भी null आ गया. ये क्यों आया? Because हमने यहाँ पे null लिखा था. तो अगर if you want to leave any blank column, any column blank, then these are the two ways. एक तरीका ये है, insert into DEPT, उन कॉलम्स के नाम लिखो जिनके अंदर वैल्यूज डालनी है, जिनके अंदर वैल्यूज नहीं डालनी है उन कॉलम्स के नाम मिस कर दो और वैल्यूज भी मिस कर दो. Second way is write everything and wherever you want to leave blank, put null there. That's it, right? We have added null here, so that particular value is now blank. Clear this thing? Chalo, let's move further. I'll move back to the presentation. The next command is update command. Now see, update is DML command. DML क्या था? DML was data manipulation language. And why it is DML? The insert into command that we just did was also DML. वो भी DML था. DML क्यों? क्योंकि हम रोज के साथ डील कर रहे हैं, हम डेटा के साथ डील कर रहे हैं. अगर हम कॉलम्स के साथ डील करते हैं, if you are dealing with the structure of the table or the column in the table, then we say that such commands are data definition language commands. But when we are dealing with rows or the data present in the rows, we call such commands as data manipulation language commands. So insert into is DML, data manipulation language command, and update that we are going to start now is also DML command.
राइट। सो अपडेट कमांड किस लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड to update the attribute values of one or more tuples in a table. Tuples means rows. So you can change the values present in a row or a tuple in a table, right? We can change means update, right? For example, in the teacher table only, if you want to change the value present in the salary column of the teacher who has an ID 101, so I want to change the value of one teacher whose teacher ID is 101. So whatever is the value, let's say 40,000 is the value, I want to change that 40,000 into 55,000 in the salary column. ठीक है, उस पर्टिकुलर टीचर की सैलरी कॉलम के अंदर जो वैल्यू है मुझे उसको चेंज करके 55,000 करना है, राइट? then you what you then you have to apply update command. How will you apply this? The syntax is simply write update, write the name of the table teacher here, put this keyword set. Set is zaruri hai, remember the set. If you don't write set, till command will not work. So set, what do you want to set, what do you want to change? Salary is equal to 55,000. Salary column में value क्या कर दो? 55,000, right? Where do you want to change? For that we have to put a where command. We have to add up this where clause. So write where teacher ID is 101. So जहां पे teacher ID 101 है, उस रो के अंदर सैलरी कॉलम की वैल्यू 55,000 में चेंज हो जाएगी, राइट? सो अपडेट कमांड, if you want to apply to some particular rows, then you have to put a where condition at the end. ठीक है? Like if you want all the teachers whose salary is more than, let's say 50,000, you want to change that salary into 1 lakh. So what will write? Will write update teacher set salary is equal to 1 lakh, where teacher ID greater than or equal to 55,000. ठीक है? I'll write here. Update teacher set salary is equal to 1 lakh, where teacher underscore ID is greater than equal to 50,000 सेमीकोलन. ये क्या किया हमने? Wherever we have teacher ID value more than or equal to 50,000, there the salary column will change. The value inside the salary column will change to 1 lakh. जहां जहां भी teacher ID value, sorry, salary, not teacher ID, जहां जहां भी सैलरी की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है या 50,000 है, वहां पे सैलरी चेंज हो जाएगी 1 लाख में. ठीक है? this is all update command about. One more thing, if I don't write where clause, मैं अगर where नहीं लिखता हूं, मैं इसको ऐसे ही प्रिंट टाइप करके एंटर प्रेस करता हूं. If I run this command as it is, what will happen? Update teacher set salary is equal to 1 lakh semicolon and run this command. Run this command means I'll press enter, it will automatically run. तो क्या होगा? अगर आप where नहीं दे रहे हो तो वो क्या करता है? It will change all the values of the salary column to 1 lakh. सैलरी कॉलम में जितनी वैल्यूज हैं सारी की सारी 1 लाख में चेंज हो जाएंगी. ठीक है? ऑल द वैल्यूज. So that's why we always prefer to give where clause at the end, so that we can change only in some specific kind of columns or rows. ठीक है? तो ये ध्यान रखना है, अगर आप where नहीं लगा रहे हो तो it will change everything. पूरे कॉलम, सैलरी कॉलम में सारी की सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी. ठीक है?
Another important thing, this generally comes in exam also. So we can also use algebraic expressions in the set clause. Algebraic expression means plus, minus, multiply, divide, etc. Generally, plus is asked in exams. Like when the question comes, I want to increase the salary of the teacher Shania by 5,000. Shania जिसका नाम है, जिस टीचर का नाम है, उसकी सैलरी 5,000 इंक्रीज करनी है. अब इंक्रीज करनी है मतलब पुरानी वैल्यू में 5,000 प्लस करना है. Right, we need to add up a value 5,000 to the old salary or the salary which is there in the table, right? So for that, after set you write salary is equal to salary plus 5,000. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो एक एग्जीक्यूशन में कैसे होगा, सैलरी के कॉलम की वैल्यू में 5,000 प्लस होगा और सैलरी कॉलम को ही असाइन हो जाएगा, right? So this will update the salary column value by 5,000. It will add 5,000 into the value which is already there in the salary column. ठीक है. और again we have to put a where clause because we want to change only for Shania. So where teacher name is Shania, only there will this change will happen. अगर हम where नहीं लगाते हैं तो 5,000 will be added to all the values in the salary column. If you're not writing this where clause, then salary column में जो values हैं, all the values will be changed, right? If we don't refer this where clause. Fine. So this is all about update command. Now you have to practice this at home also. Only then you'll be able to do. हम लोग एक बार SQL interface open करके check करते हैं. Let's see. Let's say I want to change the department name as science department wherever we have null, right? जहां पे भी null है, ये दो जगह पे null है in this DEPT column, DEPT table. I want to change this null with science department. So I'll write update name of the table was DEPT, set DEPT name is equal to science department where DEPT name is equal to is null. Remember, null, if you want to compare null, we don't write equal to null, we always write is null or is not null. ठीक है. अगर आप वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं, if you're comparing a value, then we put that column name is equal to that value. जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में किया, right? In presentation we have written where teacher name is equal to Shinaya, right? But in case of null, we don't write equal to null, we write is null. So null is compared with the help of is keyword, not equal to, remember. So ये क्या करेगा? It will update the department table and it will change the department name to science department wherever department name has null value, right? Press enter, query OK. 2 rows are affected, based 2 places the changes are there. If you see the table again, select star from DEPT. See now, in place of null, we have changed the value to science department, right? So this is how the table works, the update command works. It'll also show you that in case we don't write this where part, what will happen? Update DEPT set department name is equal to science department. We are not writing where clause after this. So what will happen? It will change all the values of this column DPT name with science department. So ये IT वाला भी change हो जाएगा science department में. So this IT department also change into science department. Let's see.
See, every value has been changed into science department. So that's why where clause is important after update command, because that will identify, that will check where in which particular row you want to change. So that particular row you can mention. Okay. And we can also put conditions like where department number is greater than 1,000 or 100. So it will change only in those values, on those areas, in those rows where the department number value is greater than 100. So we can put greater than, we can put less than, we can put not equal to or equal to. Okay. So comparison operators we can put as per requirements. Chalo, is this thing clear to all? Clear to all? Any problems? समझ आ रहा है? No, sir. Yes, sir. तो काइंडली प्रैक्टिस दिस एट होम. अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चीजें भूल जाएंगी. राइट. Presentation, I think I haven't shared it. I'll share it today. Presentation, this PPT that I have made on MySQL, I'll share it today. So kindly refer that PowerPoint presentation and do practice this at home. Otherwise, you'll not be able to understand. Practice करना बहुत important है. ठीक है? So kindly practice, and if you people find any difficulty, any problem, you can come up anytime, right? You can ask me anytime.